So basically today we are going to Yes, discuss sir. about if you are a pharmacist and looking to migrate to Australia, if you want to work in Australia, so what are the ways for you you can migrate to Australia? And so at the end of this webinar, you can ask me any questions you have, or you can note down your questions. You can ask me one by one, or maybe you can type your question in the chat box also, so I can also read your question and I will give the answer. Okay. So whatever time will take, around 1 hour, 2 hour, 3 hour, I will be here until I finish, all of your questions. So please be patient and please mute yourself now. But when you are asking the question, then at the time you can unmute. Okay. So basically, academically.ai is a company that provide the basically the migration assistance for all the healthcare professionals like pharmacists, medical doctors, nurses, physiotherapists, or dentists. I mean any healthcare professional. They completed their degree. Now they want to migrate to Australia. So academically will help them to complete their process so easily they can migrate to Australia with their family. Okay, so this is the simple aim for the academically. So as of you might be know about myself, so my name is Dr. Akram Ahmed. So I have around 10 years experience in India, Malaysia, and last 6 years I'm living in Australia. So yeah, so basically the aim to start academically was, to create awareness among the Indian communities. Basically, most of the people always they complain that the pharmacists are not getting a job in India, and salary is very very low. Is a waste course. Why we do this course, this and that. So a lot of complaints about this course. So I just started the YouTube channel back like 5 years back. To guide you guys. So there is a lot of scope and opportunities for you in abroad, not just in India. Okay. So once you completed your pharmacy degrees, a lot of opportunities for you, so you can avail and you can come to Australia and some other countries. So today in this discuss, I will discuss about the Australia and New Zealand. But if you have any other questions also, you can ask me. I hope you most of them are the pharmacists. But if you are from other background also, you can ask me the question at the end of this webinar. So academically basically provide two services. One is the study abroad. If you want to study any courses, we can help you to get your admission done. And second is the pharmacist registration. So if you want to work as a pharmacist in Australia, so we can help you to complete your registration process. So easily you can migrate to Australia and you can work in Australia. This is very, very easy process. So I highly recommended go for registration process as compared to study abroad. Study abroad, you need to spend about up to 40 lakh Indian rupees, and it's still not possible to get visa and PR. Again, you need to write the same KAPS exam. Okay, so I'm not recommend to go for study to come on a study visa in Australia. But if you want, we can help you. So my highly recommendation for you to go for your registration pathway, so you can become a registered pharmacist in Australia. There's a high demand in Australia and with high salaries. So basically, if you are basically you just completed your bachelor degree, Bachelor of Pharmacy or Master of Pharmacy or PharmD, or whether you have a work experience in retail pharmacy or hospital pharmacy, so you can migrate Australia as a retail pharmacist or hospital pharmacist. So as you know, if you want to practice as a pharmacist, then you need registration to work as a pharmacist. So for that, there's some steps you need to complete. First step, initial skill assessment with Australian Pharmacy Council. So we will do this step. You just need to provide us your scanned copy of your documents. Okay. Next, basically, you need to write a KAPS exam, and we will provide you the 4-month live classes coaching. Will cover A to Z. You just need to revise those content, and most likely, I can say you will 100% you will pass if you can study 3 hours. If you can give 3 hours per day for 90 days. Okay. Then you also need to pass an English test. So as you know, there are 4 English tests you can give, like IELTS, TOEFL, PT, and PTE. So PT is very, very easy as compared to other exams. So we highly recommend it to go for PTE.
So for example, if your score is 6 in IELTS, 7 you can score in PT. If you score 7 in IELTS, 8 you can score in PT. So PT is highly recommended if you are planning to come Australia. So skill assessment, we will do your KAPS exam. We will help you to pass. Again, we will help you to pass English test. Then after that, you can directly apply your permanent visa or PR visa and you can migrate to Australia. So this is basically applicable for retail pharmacists or hospital pharmacists, both. And I can see the 90% jobs in Australia only available in these two sectors, retail pharmacy or hospital pharmacy. And then next step, if you completed your bachelor degree or MPharm or PharmD, now you are working in pharmaceutical industry. You are working as an industrial pharmacist in India or in your home country. Then you can migrate as an industrial pharmacist. Okay. So for this, you have to apply for skill assessment. We will do your skill assessment. We will apply from here. And then you need to pass a PT exam. Then you can file your visa. So for industrial pharmacists, no need to write any exam, pharmacy exam. But the job opportunities also is low as compared to this pharmacist exam. So highly recommended go for the KAPS exam, write KAPS exam. KAPS exam is very, very easy. Anyone can pass this exam. Any, the ordinary student, those pass the pharmacy degree from India or back from your home country. So easily you can pass this exam. Okay. And next, if you did your diploma, bachelor degree, and now you are working as a pharmacy technician. So pharmacy technician also you can apply. This is also, again, no need to have any pharmacy exam. But if you have pharmacy degree, so you can come technician first, and later on you can write the KAPS exam. Okay. Even if you are a university lecturer, also you did your master or PhD, still you need to go with the same process. Okay. So KAPS exam is, even if you did your PhD, also you want to work as a pharmacy professor or teacher also, again, you need to write this KAPS exam to become a pharmacist, registered pharmacist, then you can apply. So registration is very, very important. What jobs you want to do as a pharmacist in Australia. So the first step called initial skill assessment. So in this step, so basically there's a major difference in the Australia and New Zealand. These two countries basically have the same steps you need to complete. So first is skill assessment, then KAPS exam, then English. So this is applicable for the both countries. But the difference only in these two countries, New Zealand required at least minimum 1 year working experience in retail pharmacy or hospital pharmacy. Or in Australia, no need to have any work experience. If you have a zero experience, you just a fresher, you can apply. Or maybe if you completed your pharmacy degree like 5 or 10 years back, and you are working in any other field. For example, you are a MR, or you are working in any other field, pharmacovigilance, clinical trials, or any other field. Now you want to migrate Australia, still you can to Australia, but New Zealand you cannot because you do not have any work experience in retail pharmacy or hospital pharmacy. And second major difference is the New Zealand only provide 2 attempts in the exam. So if you fail 2 times, not sit for 3rd time. The Australia provide unlimited attempt, so you can take unlimited attempt for the Australia. So whether it is 5 times, 6 times, but if you join academically, we will make sure definitely you will pass in your first attempt and the KAPS exam. So skill assessment, basically nothing but they just want to check your documents, your degree, your transcript, your registration, and all these documents you need to submit to Australian Pharmacy Council. And the fees you need to pay around 1310 Australian dollar. Okay. And it may take around 8 to 12 weeks. 2 to 3 महीने लग सकते हैं इसके अंदर और still assessment के अंदर, and then you need to sit in the KAPS exam. The first step assessment, and then next step the exam you need to write. So KAPS exam, please mute yourself. So the part 2, basically you step 2, step 1 is skill assessment. We will do your skill assessment. No need to worry. You just need to provide us your documents, scan copy of your documents.
and then you need to write a KAPS exam. So for KAPS exam is very, very easy exam, I can say. The passing mark 50% and no negative marking. Okay. And most likely, if you can even correct 35 questions out of 100, definitely you will pass this exam, because the rest of the 65 questions, if you just guess, definitely you can correct more than 15 questions. And because there is no negative marking, of course, then you need to attend all 100 questions. And it's a 2 hour, this is the exam they will give you. So I can say very, very easy exam. And there are so many centers in India. Currently, we have 8 centers in India. Pakistan have 2 centers. Even Nepal also have 1 center. So there are so many centers in the worldwide for the KAPS exam. So if we and this exam 3 times yearly, March, July, and November every year. Okay. So after you give the exam, you will receive the result within 2 to 3 weeks. So this was the news from Pharma Tutor. That, as you know, this is a very famous portal in India. So in our last batch, 90% students pass this exam in their first attempt. Okay, so if you join academically, definitely 100% you will pass this, I can say. So first step, skill assessment, we will do your skill assessment. Then second step, KAPS exam, will provide you the coaching, you will pass that exam. Then third step is the English test or English requirement you need to pass. So we will provide you the coaching for this also for 1 month. So easily you can crack this exam as well. Okay. So here you need to go for academic one, like IELTS academic or PT academic, you need to choose, because you are going for the registration process. Okay. OET also you can go, and TOEFL, but highly recommended to go for PT, because it is very, very easy as compared to other, as I told you earlier also. So if your score is 6, if you are scoring in IELTS, so 7 you can score in PTE. If your score is 7 in IELTS, you can score in PT. So if you have a high score in English, more chance to get visa, because the point system work here, point-based system. So if you have a high point, you will get a visa first. So if you are industrial pharmacist, then English exam, then EOI and visa you can file. There is no need to have any pharmacy exam. And then same for pharmacy technician. So once you complete these steps, so you are eligible. Now you have a two basically I can say there's a 2 route for you to come Australia. Excuse me, sir. रुक जाओ अभी, एक्सक्यूज मी बाद में करना है, खत्म हो जाए तो अभी उसके बाद में करना. Okay, sir. क्वेश्चन प्लीज बाद में करना जब खत्म हो जाए तो. Okay, sir. Once you completed this process, skill assessment, then KAPS exam, then English, then you can apply these kind of visa. Okay, so there's a 2 major visa. One is the PR visa, permanent visa. You can apply like 190 and 491. So many of our students, they got this visa within 4 days, 5 days, 1 week. Okay, and another, all these are the work visa also you can get. Basically, you have 2 options. There you have 2 options. Basically, once you complete this process, you can be in India and find a job in Australia, and then the company will sponsor your visa and you can come to Australia on a work visa. But this route I'm not recommended, mostly because if you are looking a job from India, so the employer will want to give you some condition. Basically, you need to you need to work for the particular employer for 3 years, 4 years, 5 years. And they might not increase your salary. And if your employer is not good, so it's very, very tough for you to survive 3 years, 4, 5 years, whatever. The best route to apply your permanent visa and get your visa and come with your family to Australia, and this is your own visa, so you will definitely get the higher package as compared to if you're planning to come on work visa. Okay, and most of the students ask me, sir, do I need a sponsor for the visa? So answer is no. If you are applying for PR visa, do not need any sponsor. Government will sponsor your visa basically. Okay,
But if you are applying for work visa only you need a sponsor. Someone has to give you a job, then only you can apply. So this pathway I'm not taking, as I told you. You have to go for permanent visa. So permanently you can migrate to Australia with your family easily. So once you come to Australia, so the first job you will get as an intern pharmacist. So you have to do internship as a pharmacist for 12 months. And this is basically a paid job. So you will get around $30 per hour, your salary. And then once you completed this internship, become a pharmacist, then you can write this like a community pharmacist. You can work retail pharmacy, or you can work in hospital. Is up to you, where your interest. Or in future also, you can go for clinical pharmacist or country pharmacist also. So on an average salary for Australia, around 80,000 to 120,000 yearly. And in Indian rupees, if we convert it to around 3 to 5 lakh, you will get at least for the per month salary, basically. Okay. And all the process, if you start from day one, it might take to 6 months to 9 months, I can say, not even 1 year. So here are some of the Google reviews. The 100 plus Google reviews we have from our students who are passed the exam. They are in Australia. So if you have any questions, you also can WhatsApp on these numbers from our team. You can connect with them, or you can also email on this email. Yeah. So this is now we can take your questions. I'm happy to take your questions. So if you have any questions, you can now ask one by one. So I will read your name, then you can otherwise, you will ask. If everyone asks the question, there might be a problem. Yes, Rishabh Sharma. Rishabh, hi, how are you? Hello. Very good afternoon. Hi. Is it audible, sir? Yes, Rishabh. Actually, sir, basically I'm from India. I'm in touch with Gatha ma'am. She is from Dehradun, no? वो उनको छोड़ो, तो वो कहाँ से हैं? तो कंपनी के एम्प्लॉय हैं। मैं क्या बताऊँ पर्सनल उनकी इन्फॉर्मेशन, वो कौन सी लोकेशन पे है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। ये सर तो मेरे को एक चीज पूछनी थी। यस, एक्चुअली मेरे को सर ये चीज पूछनी थी। मेरी फाइल एक्चुअली लगी हुई है, सही लगी। मैंने बी फार्मेसी कर रखी है, ठीक है। मेरे पास अभी सर इतना पैसा नहीं है, मतलब जो मैं कैप्स की तैयारी कर सकूं। काय की फाइल लगाई है? मैंने एम फार्मा की सर, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी। तो भाई उसके पैसे कहाँ से लगा होगा 80 लाख रुपए? अजब, आप नहीं तो 80 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए नहीं है, 5 लाख रुपए के लिए रो रहे हो। ये बेसिकली चाहता है इसमें स्टडी करने मत आओ, बहुत बड़ी बेवकूफी है। अगर आपने स्टडी करने आते हो $100,000 आपको फीस देनी पड़ेगी। एटलीस्ट मिनिमम 70,000 तो 100,000 फीस होती है मास्टर ऑफ फार्मेसी अगर आप करने आते हो ऑस्ट्रेलिया में, राइट? एंड देन यू हैव टू स्टडी हियर फॉर 2 years, देन यू कैन अप्लाई द वीजा आफ्टर लाइक 3 साल के बाद आपको वीजा मिलेगी, मे बी मिलेगी या नहीं पता नहीं, उस टाइम पे क्या हो, गवर्नमेंट चेंज भी कर सकती है रूल्स रेगुलेशन। सो not recommended for anyone to come on a study visa, okay? But if you came on a study visa already, you are in Australia, then immediately you can start preparing yourself for KAPS. So if you can pass the KAPS in your first semester and can get the visa, so you might be, no need to pay for the fees and all those things. Otherwise, very, very expensive process to study here, especially the Master of Pharmacy. Around 100,000 up to 100,000 the fees. So Rishabh, this is your question is unvalid. Basically, you are saying you don't have money and you are ready to invest in a Master of Pharmacy 70 to 80,000. What is the fees for Griffith University? फीस कितनी है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी की ऋषभ? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस सर, मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। सर, ऑस्ट्रेलिया में पर मंथ मतलब रहने का खाने का कितना खर्चा आएगा और इंडियन करेंसी? डिपेंड करता है भाई कि वो आप मैरिड हो, बच्चे कितने हैं आपको सिंगल रहना है, घर लेकर रहना है, या एक खाली आपको एक रूम में रह सकते हो आप, है ना? मगर कोई अगर सिंगल बंदा है और तो वो एक रूम में भी रह सकता है, राइट? तो उस केस में जो है जितने पैसे आपको मिलेंगे आप आधे के आसपास आप सेव कर सकते हो।
आधे से और ज्यादा ही सेव करोगे। बेसिकली सेविंग जो होती है इंडिविजुअल बंदे पर डिपेंड करती है। अब तुम यहाँ पे आगे तुम्हें गाड़ी भी खरीदनी है, आईपैड खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, सब चीज तुम्हें महंगी महंगी खरीदनी है, तो फिर पैसे कहाँ से बचेंगे? नो मगर सर, कुछ एक लोग होता है कि नॉर्मल नहीं सर मतलब मैं एक एक बहुत ही नॉर्मल। इकोनॉमिक मिनिमम उस पर रहूंगा, तो उस केस में आप जो है 1.5-2 लाख भी आप सेव कर सकते हो, 1.5 लाख तक भी सेव कर सकते हो पर मंथ। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। यस नोमान। सर, हेलो सर। यस साहिल कपूर। सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी, जो पीआर का जो प्रोसेस है बेसिकली आफ्टर कैप्स ही हम कर सकते हैं ना, फार्मेसी टेक्नीशियन के बाद तो नहीं कर सकते? उसके बाद भी कर सकते हो, पर उसमें बहुत ही लो प्रोसेस है, मिला मिला नहीं भी मिला, उनको गारंटी नहीं होती। कैप्स आपने किया तो 100% गारंटेड है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, 100% गारंटी आफ्टर कैप्स आपका अभी मतलब हो तक जाए? हमारे जितने बच्चों ने किया है, कोई ऐसा बच्चा है नहीं जिसको नहीं मिला है, तो ठीक है इसलिए सर। हम बोल रहे गारंटी। गारंटी तो कुछ भी नहीं ओके, होती, नहीं राइट? समझ गया अब सर जो आपकी जितने बात। 56 हमारे जो बच्चे पास किए थे ये मार्च को, 19 मार्च को, हाँ जी, हाँ जी। मैक्सिमम को भी मिल गया, और जो ओके। लास्ट ईयर नवंबर में सबको तो मिल ही गया, तो उसकी ओके, वजह से मैं बोल रहा हूँ कि सबको मिल रहा। तो सर अभी जैसे मेरा इस मंथ पीटी एग्जाम है और मैं कैप्स के लिए आप ही के इंस्टीट्यूट से मतलब फाइल करवाना चाह रहा हूँ कैप्स के लिए, तो सर यस, इसमें कितना टाइम लग जाएगा मुझे पीआर मिलने तक आफ्टर ये कैप्स? तो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने जिस दिन एग्जाम पास कर लिया, हाँ हाँ। एग्जाम के 1 से 3 महीने में आपका काम हो जाएगा, आप ऐसा लगा लो। अब एग्जाम आप नवंबर में लिखोगे या अगले साल मार्च में लिखोगे, तो ये तो ठीक आपके हाथ में है ना। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जैसे आपने कैप्स पास कर लिया तो 3 महीने में आपका काम हो जाएगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग द थैंक यू कॉन्फिडेंस। साहिल। हेलो, Sir, Assalamualaikum, sir. यस सर। Sir, I am Shubha from Bangladesh. ओके शुभ, हाउ आर यू? Yes, sir, fine. Sir, I have a question. Sir, in Australia, all our Bangladeshi university certificate are eligible. यस, व्हाई नॉट? Uh, देयर आर सो मेनी there, बांग्लादेशीज already working here. If okay. any university approved by your local government, I mean your Bangladeshi government, so it is valid in Oh, Australia also. If okay, it is okay. not approved by your government, they will not approve your degree. Might be the fake degree, something like this. Okay, For okay, example, if sir. someone is from India, so we have a called UGC. We have one body in India. So UGC has Okay. to approve, give the approval for all the universities. So any university Oh, approved by UGC, so automatically will eligible here in Australia. okay, sir. Sir, I have another question. Is we are the Bangladeshi in your academy. Sorry, I can't hear your voice. Basically, we have several Hmm. several student We are folks. the Bangladeshi student. So I want to join your academy. So how can we admit in your academy? Please kindly. So yes, say. yes. So Suvo, you do one thing. We just go to chat box. We given one form. You just fill that form. We have so many students basically from Bangladesh right now. So just fill that form, and our team will connect to you soon. Okay, okay, sir. I already fill up the form अगर yesterday. आप अपना, I mean, you also can leave your phone number and email also in our chat box. So within 1 hour, our team will connect to you. Okay. Okay, sir. Thank you so much अस्सलामुअलैकुम for सर। valuable information. Okay. Thank you, Subho. Yes, next सर, please. Yes. हेलो सर। Yes, हेलो Ashish. सर, गुड Yes, आफ्टरनून Ashish. सर। Good afternoon. How are you? बोल रहे हैं Yes, Ashish, please सर, मैंने continue. डिप्लोमा इन फार्मेसी हेलो किया है सर, गुड सर। आफ्टरनून। प्लीज वन सर, बाय मैंने वन, मैं डिप्लोमा यहाँ इन 3 फार्मेसी घंटे किया है तक हूँ, सर। तो आप लोग एक एक करके क्वेश्चन करो, ताकि जो है सबको सुनाई भी दे, ठीक है? और आप दूसरे लोगों का भी क्वेश्चन सुनते रहो, वो क्या पूछ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, वेदर यू आर आस्किंग और नॉट। ओके, यस प्लीज नेक्स्ट, पूछो क्वेश्चन। सर, मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है सर, हाँ हाँ, तो बताओ आगे, तो बताओ क्या है उस और मैं डॉक्यूमेंट। फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए जाना चाहता हूँ सर। वो मैंने अभी तुम्हें बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में भाई, वो जा तो सकते हो, फार्मेसी पर टेक्नीशियन के लिए मे सर। बी और मे बी नोट रहता है उसके अंदर। इफ यू आर ए मतलब आपने बैचलर डिग्री किया है, डिग्री की वैल्यू होती है, डिप्लोमा की कहीं वैल्यू नहीं होती है बेसिकली, ना। बट स्टिल इफ यू वांट टू माइग्रेट एज अ टेक्नीशियन यू कैन। तो उसके लिए आपको फर्स्ट यू नीड टू पास इंग्लिश टेस्ट, ओके, देन वी विल अप्लाई योर स्किल असेसमेंट।
अभी तो सर इसमें डी फार्म कहाँ से क्या सर एक्सपीरियंस कितना होगा सर इसमें? सर मिनिमम 1 ईयर हरियाणा से एक्सपीरियंस किया है चाहिए। सर, इंडिया 1 ईयर से। एक्सपीरियंस चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। और पीटी, और सर पीटी पीटी में में कितना सपोर्ट चाहिए? 7 मिनिमम, मतलब 65 चाहिए। अस्सलामुअलैकुम सर। ओके सर, सर थैंक यू सर। ये शोएब प्लीज। कैप्स क्लियर करने के बाद सर जॉब आप लगा के दोगे यार, हमको ढूंढना पड़ेगा खुद से? भाई हम थोड़ी क्यों लगा, हमको एजेंट थोड़ी नहीं तो जॉब लगा के देंगे। हम आपको बताएंगे जॉब कैसे मिलती है। जितने भी हमारे पास बच्चे हैं सबकी जॉब लग गई है, कोई ऐसा बच्चा है नहीं इसकी जॉब नहीं लग रही है। तो हम बताते हैं उनको कि जॉब असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, कि जॉब बेसिकली वंस यू पास द कैप्स एग्जाम देन दे विल गिव यू द गाइडेंस फॉर यू स्टार्टिंग सैलरी कितनी हाउ होगी टू सर वहाँ फाइंड पे? इट। पहले पास तो कर ले कि सैलरी कितनी होगी यार। तेरी जितनी इंडिया में सैलरी होती है ना उसको उसके तुम लगा लो 10 गुना हर महीने में लेंगे तुम्हारे को यहाँ पर। तो सैलरी मैंने बताया था, तुमने सुना नहीं कि 3 से 5 लाख रुपए होती है पर मंथ। फिर तुम वही रिपीट कर रहे हो क्वेश्चन। सर मेरे क्वेश्चन का ऐसी कुछ आंसर चीजें दो। पूछो जो मांग ले आप। तो गूगल पे Sir, you are offering Malaysia. यस हेमू। टेक्निकली में एडमिशन के लिए सर। हेलो Hello, यस sir. यस हेमू प्लीज। Sir, you are offering for Malaysia job vacancy Who told we are providing for the job? pharmacist. For pharmacist. No. Even Only in Malaysian Australia. pharmacists are not getting a job. How you can get a job? Hello, sir. In Malaysia, basically there is no opportunities for pharmacists. Zero opportunities I can say, because the local even not able to get a job in Malaysia. So they are not Sir, in hiring. Singapore? In Singapore, sir, Singapore for also pharmacist. no job for Same pharmacists. as like. Yes. Okay, मेरे okay, sir. क्वेश्चन का आंसर दो सर। हेलो सर। Yes, that. सर मैं ये बोल रहा हूँ एकेडमिकली में एडमिशन के लिए क्या करना होगा? बताया भी, चैट बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया उसको आप फिल कर दो तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। ईएमआई में पेमेंट करना है जैसे आपको एकेडमिकली में एडमिशन के बाद, तौसीफ तो उसके लिए कितनी इंस्टॉलमेंट? फॉर्म तो शेयर कर दो भाई इसमें चैट बॉक्स में। कौन है यहाँ पर अवेलेबल? सर आई एम शेयरिंग राइट नाउ। अरे यार। Hello, sir. Good afternoon. सर आई एम शेयरिंग राइट नाउ। Hello, sir. Yes, hi, yes, please. Please. So this is Harpreet Kaur from Ludhiana, and my son is studying B Pharmacy and he's in last year. And I want to join for his masters in pharmacy in Australia. Does he need 1 year experience of his work in India? No. And No work experience required. No. No, but he have to go for PTE exam. Yes, any English test he has to go. And how much score he wants to get in his overall 4 years degree? This is, you have to check with universities. So each university have their own requirement. But on an average, if you have minimum 6.5 or 7 need IELTS or 65 in PT. Fine, sir. Then he's eligible to go for masters in pharmacy. Yes. Sir, is any scholarship program is also there in Australia? No. No scholarship program. No. Thank you, sir. Thank you. Yes. Yes. Good afternoon, sir. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon. Hello, sir. Myself Shahjahan, sir. I belongs to India. So I had a question about the PR, sir. So actually, I worked as a clinical pharmacist in one of the hospitals in India, like 1.5 months. So in PR, they're asking about for the experience of 2 to 3 years, right? Where they are? If you want to, where they are? Sir, no, if you want to file PR, they're asking for the PR like points like 5. Any experience. Basically, if you have 3 year experience, they will give you 5 points. If you have a 0 experience, 1 year experience, 2 year experience, you will get a 0 point only. So the experience is not mandatory. If you are a fresher, you can come to Australia, or if you have 3 year experience, you will get a 5 point only, additional point. That's it. Experience is not required to come Australia on PR visa. Not required, sir. Yeah, okay, sir. Thank you, sir. So I can show you, this is the main. Yes, Emma.
Sir, I am from India. I'm having experience 2 years in retail pharmacist and now working as a lecturer in 3 years. So totally, I'm having 5 years experience in Australia. How much salary belongs to my experience? Basically, what is the teaching experience is not no use. No use. The Okay. main problem in India, people are not getting a job, so they are going here and there. And so if you want to work in Australia as a pharmacist, your experience must be in retail pharmacy or hospital pharmacy. Apart from this, if you are working something else, so the experience they will not count it. Okay, but for Australia, you can migrate even if you have a zero experience also. Okay, so salary is not depending on experience. Salary depend on your individual, your skills basically. So initially, when Performance. you start for 3 lakh, it might be go for 5 lakh within few months if you Okay. really have a good pharmacist skills. Sir, I have a doubt. Sir. Yes. Hello, sir. Hello. Hello, Assalamu sir. alaikum, sir. यस ये यहाँ पर बेसिकली हमने यहाँ पर अभी एक ये दिया है, एक फॉर्म दिया है कॉन्ट्रैक्टर्स वाला, प्लीज इसको फिल कर दो आप, तो हमारी टीम आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी. ठीक है. यस मतलब सर प्लीज. ठीक है मतलब सर मैं अभी जी नाम सर. ले लेकर बताता हूँ आप लोग को. यस हाँ जी सर. सर वो मैं ये बताना चाह रहा था आपको, जैसे कि अपने इनिशियल स्किल असेसमेंट और कैप्स की एग्जाम की जो फीस है, जो कन्वर्ट करे तो 2 लाख रुपीस हो रहा. हाँ तो इंडियन करेंसी में. ओके. और सर एकेडमिकली का कितना लगेगा सर? वो यार तुम मैं यहाँ पर पैसे बताने थोड़ी नहीं बैठा हुआ हूँ. मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई मुझसे, जो कहीं नहीं मिल रहा है आपको. आप ये बात आप फॉर्म फिल कर, तुम्हारी टीम से बात करो, वो बताएंगे आपको एक केस स्टाइप पे कितने पैसे लगेंगे. ओके ओके सर. हाँ, आप ये पैसों वाली बात हमारी टीम से डायरेक्टली वो आपसे बात करेंगे, आपसे वीडियो पे ऑडियो पे, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे. तो आप ये जस्ट जो फॉर्म डाला है हमने अपने ये चैट बॉक्स में, इसको फिल कर दो ओनली, या अपना मोबाइल नंबर और ईमेल छोड़ दो, तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी. ठीक है, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे. बट आई एम हियर, यू हैव अ चांस टू आस्क मी एनी अदर क्वेश्चन, कि कोई भी अगर क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है, तो एकेडमिकली की फीस. सर वो जब सर, आई हैव अ डाउट रिगार्डिंग वीजा. इंटर्न फार्मासिस्ट के बाद जब फार्मासिस्ट बनते तो मिनिमम $40 एक घंटे का मिलता. तो बाद में जैसे एक्सपीरियंस होता ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो सैलरी हाई हो सकती है सर? हाँ, तो हर जगह होती है, इंडिया में भी होती है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं होगी? यहाँ तो रूल इतना पक्के है. बेसिकली जो सैलरी बढ़ती है वो डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पे, करंट नहीं करता ओनली, आल्सो योर स्किल्स. मे बी इफ यू आर ए गुड फार्मासिस्ट, योर सैलरी कैन बी इंक्रीज इन विद इन 1 year एज वेल. तो यहाँ पर $50-60 तक मिलते हैं पर आवर के, जो फार्मासिस्ट को, जो 3-4-5 साल जो. Okay, sir. Assalamu alaikum. I'm from Bangladesh. My name is Toki. Hello. Yes, Toki. Yeah. Sir, I'm a pharmacist. I have completed Pharm also, MBA also. Yes, continue. MBA certificate, MBA, marketing in MBA, and Pharm also. Is there any privilege in the marketing MBA in the Gulf country or any others? No. Okay. Basically, which one is the easiest among the countries? Only bachelor degree need. Yeah, there is no need for M.Pharm. These are the rubbish basically. I'm talking about another countries like Gulf country. Most of the countries they need only bachelor degree. They need a person he can work. For example, in marketing, B.Pharm also can do marketing. What is the need for MBA? Something specialized in pharmacy. Okay. If I want to work in the hospital pharmacy, it's mandatory for the clinical pharmacist or any general masters are counted. Bachelor degree is enough. No need to your master degree. These are both. You did additional base degree basically, in my opinion. So, in basically the main problem in India, Pakistan, Bangladesh, people think that if they have a higher degree, they will get a higher paid. But this concept is no longer working. So salary basically based on your skills, basically, what you can do for the employer. So if you are a bachelor degree holder pharmacist, or even you are a PhD holder pharmacist, you have to work with the same work. And you have to know your skills while you are working. So while you are working, if you are a good pharmacist, definitely they will increase your salary. Thank you. Sir, good afternoon, sir. Myself, Yogesh. Yes, Yogesh.
from India, sir. I have completed my bachelor's in pharmacy, sir, and I have around a 1 year experience in a community retail pharmacy, sir. So I would like to work in any of the European countries, sir. Is there any suggestions based on other than Australia for While European going to country European needs countries? 5-year degree, so you are basically not eligible to country. European countries maximum they required Pharm D, not B Pharm. European countries, even Ireland, US, even Saudi Arabia, as a country, also they are asking nowadays Pharm D or M Pharm, not B Pharm. Okay. Okay, sir. But for B Pharm, you can migrate Australia, New Zealand, Canada. So Australia is the right country. You can try for this country. Okay, sir. I'm actually planning to take my CAPS exam in the November, sir. So I will move on, stick on with that same plan, sir. So I got Yes. another offer from like move to UK, sir. Like I have got an MSc in pharmaceutical science, sir. So I in a university near to London, sir. So I thought Basically, of this is a waste of money. We have, I think, more than 15 students from London, from UK. Basically, they joined CAPS exam. They went there to do master degree in different courses. They are not getting any PR, not getting any job. They complete their time. Now they are coming to Australia after writing this exam. So don't waste your money to go Australia, UK. Or if you want to go UK, you only can go to OSPAP, OSPAP. OSPAP Yes, sir. program you can go, but it's also very long program. It might take up to 5 years for you to Yes, become. sir. I think unfortunately until 2025 that course has been stopped, sir, due to severe number of applications. I think the 4 university have shut down the course. Basically, you can just come to Australia, the best option. Okay, sir. So Sir, let I me move have on a to the doubt. CAPS exam. Just Yogesh, fill the form in the chat sir. box. We will contact you. We will help you to complete your A to Z process. Come to Australia. This is right time, I can say. Maybe after some time they may also cease after maybe 2 years or something. Before they close intake pharmacists in Australia, so you can migrate to Australia. Yes, sir. Sir, what happens in Thank skill you. assessment Thomas test? Saklan. Sir, what Yes, happens please. in skill assessment test? What happens? Just they will check I your mean, degree. They will just check your degree, your transcript, your registration, you are registered pharmacist, all these documents they will check. Sir, what if a Hello. student has any education gap between, like, it's 4-year degree, he has completed in 5 years? No, that Is there doesn't any matter. problem? Doesn't matter. Hello, sir. Good evening. This is Or Vikas. if he has any low grades? Even if you fail or you have a backlog, doesn't matter. If you at the end, if you pass the pharmacy degree or whatever your percentage, you are eligible to sit in the exam. Sir, I am in Okay, Australia thank now. you, I sir. am doing my master's in public health from हाय Macquarie विक्रांत, University. कहाँ पर हो ऑस्ट्रेलिया में? सिडनी में हूँ सर मैं। ऐसा मिलने आओ, फिर किधर सिडनी में रह रहे हो? हाँ जी, कहाँ पे आपका ऑफिस? ये इधर माउंट रोड, ब्लैक टाउन से आगे। ओके ओके, माउंट रूट में। तुम कहाँ रहते हो? मैं सिडनी में हूँ, पैरामेटा। अरे यार 15-20 मिनट लगेंगे, वहां से ट्रेन पकड़ो, आ जाओ इधर, ठीक है? अच्छा, ये एकेडमिकली के नाम से आपको? एकेडमिकली अगर तुम सर्च करोगे गूगल मैप पे तो आपको मिल जाएगा एड्रेस। बेसिकली एक जगह है ब्लैकेट, तो वहां हमारा ऑफिस है। ओके, ब्लैक टाउन में? नहीं, ब्लैक टाउन से आगे, ये जो भी तुम पैरामेटा से तुमको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, पेंड्रिथ वाली। हाँ जी हाँ जी। तो पेंड्रिथ वाली आप ट्रेन से जाओगे तो आपको उतरना है जो है माउंट रूट स्टेशन पे। हाँ जी। वहां से आपको बस मिल जाएगी। ओके ओके। ये तो क्वेश्चन क्या विक्रांत आपका? क्वेश्चन सर यही था कि थोड़ा पाथवे बता दो। अभी तो मैं मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ कर रहा हूँ, अभी आया हूँ। आपको इसमें अभी ना कितने बच्चे हमारे पास ऑलरेडी आ जा। हरियाणा से हो आप? कहाँ से हो? कहाँ से हो आप विक्रांत? मैं हरियाणा से हूँ सर। तो बहुत बच्चे हमारे पास ऑलरेडी हरियाणा के जो यहाँ पे ऑलरेडी एमपीएच कहाँ से कर रहे हो आप? वेस्टर्न सिडनी से? नो, मैक्वारी यूनिवर्सिटी है सर। मैक्वारी में जा रहे हो आप? अच्छा, तो इतना महंगा कोर्स एडमिशन ले लिया आपने, ठीक है। तो अभी आपको कैप्स पास कर लो और आपको नवंबर में एग्जाम है, आपको पीआर मिल जाएगी और कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बहुत सारे बच्चे हमारे पास हैं जिन्होंने जहाँ पर मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ कर रहे हैं या हेल्थ केयर मैनेजमेंट कर रहे हैं या दूसरे इवन मास्टर ऑफ फार्मेसी कर रहे हैं,
उन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है क्या कैप्स, तो अपने नवंबर के बैच में आप ज्वाइन कर लो, ठीक है विक्रांत? ओके ब्रो, विजिट करूंगा सर। ठीक है, वेट करो, ठीक है, बाय। जो लोग सिडनी में हैं, अगर मिलना चाहते हो तो आप मेरे से आ सकते हो एकेडमिकली के ऑफिस में, ठीक है? यस, नेक्स्ट प्लीज। Hello, sir. यस प्लीज। यस हरप्रीत। I'm from Nepal, यस हल्का। and then I have my bachelor's degree from Nepal, bachelor's in pharmacy, and I'm now here in Australia in Perth. And so, if I want to get a job in in Nepal, also I was working as an industrial pharmacist. So over here in Australia to work as an industrial pharmacist. So what should I do? Like क्या कुछ करना पड़ता है? यहाँ जॉब है ही नहीं। मैंने अभी आई थिंक यू ज्वाइन लेट, आई डोंट नो व्हेन यू ज्वाइन दिस। I clearly mentioned 90% jobs in retail pharmacy or hospital pharmacy. To become a pharmacist, that is a main rule. So industrial pharmacy, very few jobs are available. Okay. So very difficult to find an industrial pharmacy job in Australia. So if you can go for KAPS exam, that would be good for you and become pharmacist. Okay. और फिर स्किल असेसमेंट भी करना पड़ेगा उसके लिए? स्किल असेसमेंट वो हम कर देंगे, आपका कैप्स एग्जाम हम आपको पास करा देंगे। इंग्लिश आपने आईएल दिया था, कितना स्कोर है आपका? Exam I haven't given, like I am in dependent visa and like I'm working full time. Okay, so you can, exam नहीं दिया है. We will help you skill assessment, your KAPS exam plus PT. Then you can apply your own. Your husband on a work visa or student visa? No, my husband is in student visa and I am in his dependent. Then you can apply your PR visa easily. Okay, thank you. Yes. So you can leave Alka your information in our chat box. So our team will connect to you. Your skill assessment, your KAPS exam, your आराम करा देंगे, no worries. Yeah, okay, thank you. Thank you, Alka. Yes, Harpreet, please again. Hello, sir. Yes, Hello, sir. Arun, please. So kindly send the form on my WhatsApp chat. वो ऑलरेडी चैट बॉक्स में दिया हुआ है, फॉर्म को आप फिल कर दीजिए, या आप अपना नंबर छोड़ दो चैट बॉक्स में। सर मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, तो सर मैं मतलब मेरी एक क्वेरी है कि ये जॉब्स अवेलेबल कब तक रहेंगी? ये कौन मिलता रहेगा? ये कौन बता सकता है कब तक रहेंगी? तो गवर्नमेंट के हाथ में है। अभी तो मिल रही है, अभी ले लो जिसने कर लिया है फार्मेसी, बाद में मिले नहीं मिले पता नहीं, मगर ये है कि नेक्स्ट 3 साल तक तो रहनी चाहिए इन माय ओपिनियन। यूपीटीयू है, उसका नाम अब एकेटीयू कर दिया गया था सर। जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम अब अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी हो गया है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है आपका भाई? इससे क्या मतलब है यूनिवर्सिटी का नाम चेंज? लेकिन स्किल असेसमेंट पे अभी यूपीटीयू ही दे रहा है, तो क्या उससे कोई मतलब दिक्कत तो नहीं है सर? यूपीटीयू डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर यस दानिश सलाम सर। सर हमने सर पीटी का क्लास स्टार्ट कर दिया सर। सर मेरा बैचलर ऑफ फार्मेसी ग्वालियर से किया, मध्य प्रदेश से। बेसिकली रहने वाला बिहार का हूँ सर। मैं जॉब अभी झारखंड में कर रहा हूँ, तो सर मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा लूँ इसके लिए असेसमेंट के लिए? मतलब कौन सा रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट? यस सर, फार्मासिस्ट। यस आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना मैंडेटरी है। अपना स्टेट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। तो अपने स्टेट के अंदर में कहीं भी किसी भी स्टेट में कर सकते हो इंडिया में। वही तो, क्योंकि सर वो बिहार में अभी हो नहीं रहा, वो पूरा किसी भी स्टेट में करा लो। जैसे झारखंड में करवा लेता हूँ, यहाँ मैं जॉब करता हूँ तो यहाँ करवा लेता हूँ, फिर उसके बाद स्किल असेसमेंट के लिए मैं भेज दूंगा सर पूरा। यस, कहीं भी कर सकते हो आप। यस सर, थैंक यू सर। यही मैं पूछा था, नेहा मैम बोले थे कैसे हो जाएगा सर से पूछे थे। वो कहीं भी करा लो आप, जहाँ भी। वो बेसिकली इंडिया में किसी भी स्टेट में कर सकते हैं आप अपना, हाँ हो जाएगा, करा लो। ठीक है सर, मैं यहाँ से करके फिर बाकी बनता है तो मैं भेज दे रहा हूँ पूरा डॉक्यूमेंट। ठीक। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय आरजी प्रिंस, हाउ आर यू? सर मेरे क्वेश्चन हो रहे सर। हाँ आशीष। यस आशीष प्लीज पूछो। सर जो फार्मेसी
टेक्नीशियन में फार्मेसी टेक्नीशियन में क्या वर्क करना पड़ता है सर? असिस्टेंट रहोगे फार्मासिस्ट के, जो फार्मासिस्ट बोलेगा वो करना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, स्टॉक लेना, दवाइयाँ रखना, ये सब। मतलब सर assistant- अगर एक्सपीरियंस हम्म। मतलब सर अगर इंडिया में एक्सपीरियंस लेना हो सर 1 साल का, तो क्या वर्क करना पड़ेगा सर इसमें? वही जो असिस्टेंट, बेसिकली टेक्नीशियन की इतनी जॉब्स नहीं है, या वीज़ा नहीं मिलेगा आपको। अगर आपने डिग्री किया है तो चुपचाप एग्जाम पास करो और यहाँ पे आ जाओ, कैप्स एग्जाम। बाकी जो टेक्नीशियन में भी डिफिकल्ट रहता है वीज़ा मिलना। तो हाईली रिकमेंडेड है, अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आप जो है एग्जाम लिख के यहाँ पे आप आ जाएं, उसमें जॉब मिल जाएगी आपको। यस अरुण, प्लीज सर आस्क योर इसमें तो क्वेश्चन। 3 साल और लगेंगे मेरे को। वैलिडिटी कैप्स की वैलिडिटी से कोई लेना देना नहीं है, बेसिकली वैलिडिटी 3 साल की होती है। उस वैलिडिटी का मतलब होता है कि 3 साल में आपको ऑस्ट्रेलिया में आ जाना है। तो वंस यू आर इन ऑस्ट्रेलिया देन वैलिडिटी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, and then you will be registered pharmacist. Okay, sir. So if you are not coming to Australia these 3 years, then it's going to be expired. So the validity for CAPS exam for 3 years. Sir, is this CAP exam eligible for which country, sir? Only for Australia or any other countries? Australia, New Zealand. Australia, New Zealand only. Yes. Thank you, sir. Yes, Arun, please ask your question. Hello, good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, to become a consultant pharmacist, how many years experience is required after coming to Australia? There is no such condition. Maybe 0 experience also you can, if you can pass the exam. Directly consultant pharmacist, sir, in Australia? Yes, After if you can pass the exam. Okay, sir. Next, please. And there is a feedback form in the chat box. So please fill this form. If you want to connect with our team, want to take admission, want to talk to them, want to ask any fees or anything, any other questions apart from me, so you can fill this form and team will connect to you shortly. Yes, Faisal. सर मैं पूछ रहा हूँ सर, कैप्स एग्जाम के जो हमने 2 पेपर हो गए हैं सर, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। सर फर्स्ट पेपर तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन सेकंड पेपर थोड़ा टफ सा होता है, उसमें कैलकुलेशन होती है। तो फिर भाई मत आओ, इंडिया में रहो, फिर क्या करोगे? मौज नहीं करो सर, इंडिया में। कोशिश करेंगे जाने की। अजब ही हाल है in India. Basically, there is no, if you are going for IAS exam, the probability basically 99% people are failed. Hardly 1%, less than 1% is the people are passing. And it's still every year there is so many, several lakhs people are going to sit, preparing for that exam. And here for Australia, the possibility you will pass like 90%. And still you are afraid, अगर आप ऐसे अफोर्ड करें तो जिंदगी में तो कुछ कर ही नहीं सकते। बेसिकली यू आर लाइक ए वेस्ट प्रोडक्ट। फार्मेसी तुमने किया क्यों, मेरे को ऐसा लगता है इफ यू कैन नॉट पास द फार्मेसी एग्जाम, कैप्स एग्जाम, देन आई हैव अ डाउट बेसिकली कि आपने कोई नकल वकल से पढ़ाई किया, डिग्री आपको कैसे मिली, है ना। इफ यू पास योर फार्मेसी डिग्री, डेफिनेटली you can pass the pharmacist exam, CAPS exam. It's very easy exam. Absolutely, sir. Anyone can pass this exam. If you cannot pass, then I have a doubt basically, how you pass this to pharmacy degree. In my college, in my school, basically in pharmacy, always more than 20 students always fail in one subject, 2 subject, they have backlogs, So 40 out of always pass basically, like one of them. अभी तक बैक नहीं है सर वैसे एक भी। If you pass your pharmacy degree, definitely you can pass the exam. So there is no doubt. Hi, Vikrant. हेलो सर। यस सर, जैसे इंडियन एक्सपीरियंस है मेरे पास 4 ईयर का एज ए रिटेल फार्मासिस्ट, हाँ, तो उसका बेनिफिट भी रहता है कुछ? ये डेफिनेटली रहेगा। जॉब पे जाओगे तो पूछेगा कितना एक्सपीरियंस है, तो आपको बेनिफिट भी मिलेगा उसका। और अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको पॉइंट भी मिल जाएंगे उसमें, 5 पॉइंट। ओके बेनिफिट रहेगा जिसके बाद एक्सपीरियंस है तो। ओके सर, थैंक यू। यस अंजलि। अंजलि, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अखिला।
Anu? Sir, I completed my PharmD in 2000 experience as clinical pharmacist in India. So, if I come to Australia, whether is it possible to become clinical pharmacist there? First, you become a pharmacist. This is the main problem. Those are PharmD in India. They have title clinical pharmacist, but their salary like 15,000, 18,000, 20,000. So they thought that our degree is very, very superior as compared to others, But if you are going in the foreign country, whether you are a B Pharm holder, PharmD holder, M Pharm holder, even PhD holder also, you will be all are equivalent. You have to go for the same process, pass the same exam, become a pharmacist. Once you become a pharmacist, then next step you can become a clinical pharmacist if you want. Okay, so there is a separate course for that, and you need to pass that another exam for that, to become a clinical pharmacist. So directly you cannot clinical pharmacist. Okay, so if you want to work in Australia, you have to become a pharmacist first, skill assessment, then your KAPS exam, then English exam, get your visa, come to Australia, then complete your internship, become a pharmacist, then you will automatically become a clinical pharmacist after some time. It's not a big deal. No, whether my experience in India is counted, whether clinical No, pharmacist experience. no. You will be as a pharmacist, they will count it as pharmacist. What, sir? As a pharmacist, they will count your experience as a hospital pharmacist. Oh, okay. Thank you, Yes, sir. next. Hi, sir. Hi, Akhila. How are you, sir? Good, how are you? I'm good, sir. So, what is the scope for pharmacist in 2024? Because I will complete my B Pharmacy within How 2. can I say? In 2024, who is going to win in India? Modi ji or just Rahul Gandhi? How I can say? कि आप अभी right now there is a good possibility, lot of visa, lot of jobs are available. कि after 3 years what is going to be happen? So I can't comment. But most likely, in my opinion, in next 3 years in Australia, definitely there's a good opportunity and good scope for pharmacists. This is just my assessment. So I cannot say something, कि future में क्या होगा? कैसे कोई बोल सकता है? No, sir, because I will complete. Make policy. They might change the policies, visa policy, or this and that. Yes, sir. So, I will complete my B Pharmacy within 2 months, sir. That's why. So, it's take time to get the all the documents. As soon as possible. Now you can enroll basically, and then you can sit in the exam in the next March, definitely. So if you are going to finish, but I can say the scope in next 3 years definitely will be there. But after that, it is difficult. Basically, day by day is difficult because every year a lot of pharmacists are coming from the other countries. In Australia, you can imagine that only 8 pharmacy college. In India, we have a 6,000 pharmacy college. So there is demand and supply. So there is a lot of demand in Australia. Supply is very, very low. That's why they are calling to pharmacists from other countries. They can migrate to Australia. So a lot of opportunities, I can say. Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Hi, Ankush. हेलो सर। Yes, please ask your question. सर मेरे पास एक क्वेश्चन था कि सर जैसे अगर पीआर ना मिला, जैसे कभी कभी होता है कि पीआर मतलब बहुत टाइम हो जाता है, तो क्या आप जॉब नहीं कर सकते? हाँ, तो आप वर्क वीजा पा सकते हो। वैसे फार्मासिस्ट को वीजा 4 दिन में मिल रहा है। ये जो वीजा नहीं मिल रहा है, इवन समवन डिड आईआईटी से कोई बीटेक भी किया हुआ है ना, उसको वीजा नहीं मिलेगी। वीजा मिलती है द ऑक्यूपेशन पे, उसकी डिमांड कितनी है ऑक्यूपेशन की। तो अभी जो भी पास कर रहा है फार्मेसी का एग्जाम, उसको 4 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में से मिल जा रहा है वीजा। तो वीजा में कोई तो प्रॉब्लम नहीं। सर वर्किंग वीजा कितने दिन का वैलिडेशन होता है उसका? वो कंपनी पे डिपेंड करता है। 2 साल का, 3 साल का देंगे और फिर वो रिन्यू करते रहते हैं उसको। और सर टैक्सेस किस बेसिस पे लेते हैं वो? टैक्स होता है फैमिली की बेस पे कि आपके फैमिली मेंबर कितने हैं, कितनी अर्निंग्स हैं, उसकी बेस पे फिर जो है टैक्स होते हैं। बट जनरली जो है 18 to 28% तक टैक्स रहता है, 18 से 28%। और सर वहां पहुंचने के लिए कुछ पहले से पैसा अकाउंट में रहना जरूरी है? नहीं। ओके सर, थैंक यू। Yes, Hamad Zafar. Hello, sir. How are you? I'm good. How are you?
सर मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, तो आपकी जो भी इंटरव्यूज वगैरह हैं तो वो सब इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, कोई आपका पाकिस्तान से नहीं है स्टूडेंट जिसने पास किया हो अरे यार तुम एकेडमिकली से? देखते हो कि नहीं यार, इंडिया पाकिस्तान तुम्हारे से लोगों ने बर्बाद किया हुआ पाकिस्तान को और इंडिया को। इंडिया नहीं पाकिस्तान नहीं क्या सर, होता है, मैं ये बंदा जो है पूछ रहा कहीं हूँ कि का भी है। आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है इधर हम लाहौर आपको में? दस रेफरेंस देते हैं, आपने इंटरव्यू देखे नहीं है, अपनी बात किए चले जा रहे हो। जो अहमद लड़का है ना हमारा, वो पाकिस्तानी है। पहला लड़का इंडिया में और जो आया ऑस्ट्रेलिया में जो है वो इंडिया नहीं आया, वो पाकिस्तानी बच्चे से आया था। आपने देखा ही नहीं उसका इंटरव्यू, मैं दिखाता हूँ आपको अभी शेयर करके। ठीक है अहमद ये है लड़का यहाँ का, आपके इस्लामाबाद का। ठीक है, क्योंकि मैंने जो वीडियो देखी है ना उनमें नहीं है, तो इसलिए आपने मैंने पूछा। और सारे दूसरा देखे नहीं है सर इसका डीएचए मतलब, का मैंने पूछना था। आपने सारे देखे नहीं है फिर तो आपने। अहमद का एक इंटरव्यू था, मैं तो रैंडमली सर्च कर रहा हूँ, वो उसका तो पाकिस्तानी लड़का है वो। ठीक है सर। और डीएचए का मैंने पूछना था, उसका टेस्ट देने के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस लाजमी है या यस, उसके लाजमी है। बगैर? टेस्ट देने के लिए टेस्ट की है या जॉब की रिक्वायरमेंट है 2 ईयर एक्सपीरियंस? एग्जाम में बैठने की रिक्वायरमेंट है। एग्जाम में बैठने के लिए, ठीक है। हाँ, ओके सर, शुक्रिया। ये है अहमद का, पाकिस्तानी लड़का है ये, आपने देखा ही नहीं है। ये 6,000 इसके व्यूज हैं इस वीडियो के। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला इसका ये डाला हुआ था। तो ये है ठीक है फार्मासिस्ट। सर, मैं ये वीडियो देख लेता हूँ, मैं देखा नहीं है तो इसको। इससे कोई मतलब थोड़ी नहीं है कि भाई तुम्हें कि भाई पाकिस्तानी कोई बच्चा आएगा तभी आप आओगे। आपको अपने ऊपर करना चाहिए, भाई मेरे को करना है क्या नहीं करना है। अब वैसे भी वीजा जो होता है कंट्री से डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड कर हम्म। सर आपकी आवाज चली गई है। बेसिकली जो वीजा होता है ना वो डिपेंड कंट्री पर डिपेंड नहीं करता है, आप कौन सी कंट्री से, कहीं से भी आपको वीजा मिलेगी। वो क्या करता है सिस्टम, आपको देखता है कि जैसे आपने जो इन्फॉर्मेशन आप डालोगे सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो जिसके हाई पॉइंट्स होंगे उसको सिस्टम की एप्लीकेशन आपकी पिक करेगा, ऑटोमेटिकली वो आपको इनविटेशन भेज देगा कि भाई वीजा आपको ले लो। और और फिर सर वो सीजीपीए जो बाद में फिर वो चेक सीजीपीए का करता है कि मैटर मेल करता है फीमेल है, कौन सी कंट्री से था ये बंदा, कौन क्या है। यस क्या? है। सीजीपीए सर, सीजीपीए जो स्किल असेसमेंट होती नहीं है नहीं नहीं, वो डजंट मैटर। कितनी होनी चाहिए? अच्छा, कोई नहीं मैटर नहीं करता, आपने जस्ट डिग्री पास कर ली, जस्ट एनफ। डिग्री पास करनी है और इसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए कौंसिल में बस। पाकिस्तान की। यस। ओके, शुक्रिया। कोई भी एवर इफ यू आर ए फेल आल्सो, आपकी बैकलॉग आ गई है, डजंट मैटर, सीजीपीए कितना है कोई मैटर नहीं करता। आपने एट द एंड आपने डिग्री कंप्लीट करनी है और अपने होम कंट्री में रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है, दैट्स इट। ठीक है, ओके सर, शुक्रिया सर। यस, नेक्स्ट प्लीज। Hello, sir. यस अरुण। Sir, if we want to clear CAPS, so we're supposed to get each and every subject 50% or overall यस, 50% ईच एंड एवरी marks we're सब्जेक्ट, supposed to get? जैसे उसमें 4 होते हैं कंपोनेंट, चारों 50-50% लिखाना होते हैं। Okay, sir. Thank you, sir. यस आसिफ अली। विकास। एंड ये हमने चैट बॉक्स में फॉर्म फिल किया हुआ है, तो आप उसको फिल कर दीजिए, तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है किसी का? यस, स्वास्थ्य संधान। सर जैसे कि मैं अब वाले बैच में करूं या नवंबर वाले में ठीक रहेगा सर कैप्स के लिए? बात हुई थी सर भाई आप मेरी में किसी भी उसमें करो, हम तो अनलिमिटेड कोचिंग देते हैं ना, वी प्रोवाइड अनलिमिटेड कोचिंग, ठीक है। और अच्छा सर। हाँ, तो आप डे 1 से आप ज्वाइन करो, जब से आपको मटेरियल मिलेगा, जब से आपको लेक्चर मिलेंगे। और बॉस मैं जैसे मेरा वो फ्रेंड थोड़ा सा आने में उसका प्रॉब्लम है, तो सर वो अगर बाय द वे जैसे मैं अकेला आऊंगा तो मेरे लिए थोड़ा ये मतलब नई बात है सर, जॉब सर्च करना। मैं किसी को ना तो जानता हूँ ना मेरी कोई साथ कुछ तो मैं गया है बाहर, मतलब राजस्थान छोड़ के भी, तो सर थोड़ा तुम ही आ वहाँ जाओ, आठवीं पोस्ट तुम ही बन जाओ, तुम ही आ जाओ बाहर। सर हाँ सर बिल्कुल। तो सर वो मतलब थोड़ा यूँ वहाँ जॉब ढूंढने में सर थोड़ा असिस्ट आपका मिलता रहेगा तो ठीक रहेगा, बाकी बोलो। अरे भाई, ये ऊपर वाले के उस पे आओ, कोई हमारे या किसी उस पर नहीं आते। हमारे पास 500 स्टूडेंट है ऑलरेडी जो एनरोल है हमारे पास में।
अरे सर आधे मैं तो उसमें यहाँ आ चुके हैं हम तो ऑलरेडी शुरुआती ऑस्ट्रेलिया दौर में, से जुड़े हुए हैं सर। तो साथ डालते रहते हैं। 500 इवन तो अब हुए हैं सर। मैं राजस्थान का लड़का था मुजफ्फर, देखा था आपने उसका वीडियो? नहीं, नहीं देखा। देखा देखा जयपुर का। मुजफ्फर वो 3 बार फेल हो गया था दुबई के एग्जाम में। उसने किसी को पैसे दिए थे 2.5 लाख रुपए इंडिया में। हमने उसको ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम पास कराया उसको फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। नहीं नहीं सर वो हो गया डेफिनेटली विल हाँ, क्रैक, बट वहाँ थोड़ा पता नहीं समस्या होगी सर, अकेला राजस्थान में आऊंगा तो तो बहुत थोड़ा बच्चे ये हैं हमारे पास, राजस्थान में बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऑलरेडी हैं। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। तो बेसिकली कि ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई आपने कभी ये नहीं, मैं भी कभी नहीं गया था बाहर, मैं भी तो यहाँ पर रह रहा हूँ। मैं यहाँ पर आया, मेरा कोई यहाँ पर था ही नहीं, ना ही मेरा आज भी कोई मेरा रिलेटिव नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। जब पता है आप सर वहाँ मुझे, जाते हो तो फिर आप आपके तो दोस्त मलेशिया बन से घूम जाते के हैं, बहुत सर। सारी चीजें फिर आगे आगे ऊपर वाला आपको आसान करे चले जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई रिलेटिव होगा, कोई दोस्त होगा तभी आप जाओगे। फिर भी थोड़ा और यूं दोस्त के चक्कर में तो अलग देश है। कभी कभी पढ़ना भी नहीं चाहिए, अपना रास्ता खुद से बनाओ कि नहीं कि भाई वो जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा उसके पीछे पीछे। नहीं सर वहाँ जॉब सर्च करने के लिए, वहाँ रहने के लिए वगैरह ये सब चीजें हो, जब तक ना सर्च करूँ तब तक भी। अरे भाई सबके नहीं है, तुम अकेले थोड़े नहीं हो, तुम्हारे 500 बच्चे हैं हमारे पास, मैंने बताया तो रहा हूँ आपको। आपके खुद ही राजस्थान से बहुत सारे बच्चे हैं, वहाँ आपके बहुत सारे बच्चे दोस्त दोस्त बन जाएंगे आपके, उनसे आप मिलकर आए, आप साथ में आओगे आप उनके। जी सर, ओके सर। आप अकेले थोड़े नहीं हो कि आप अकेले अकेले वहाँ पर लेक्चर लोग हैं हमारा। कितने बच्चे हैं हमारे पास, तो ठीक है बहुत सर। सारे लोगों से आपकी दोस्ती हो जाएगी जो इंडिया में ही बैठे हुए हैं बच्चे हैं। ठीक आपके है सर, राजस्थान ओके। के बच्चे हैं बहुत सारे, तो राजस्थान के, यूपी के, एमपी के, और इधर जो है अपना हरियाणा, पंजाब। मैं साउथ की जी बात सर। नहीं कर रहा, हिंदी स्पीकिंग वाले मतलब हिंदी स्पीकिंग वाले इतनी जगह है बच्चे हैं। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। यस, नेक्स्ट प्लीज। कोई क्वेश्चन है किसी का, या खत्म करें यहाँ पर इसको? हेलो सर। यस सिराजुद्दीन। यस, नमस्ते सर। यस सर, sir, I am from Nepal and I am studying B Pharmacy in Uttarakhand, and I want to start KAPS preparation, and I am some confused. I am doing am Pharm for highest study or done starting for KAPS exam. Please suggest that which one is best. Yes, you can join as soon as possible. Basically, are you a registered pharmacist in Nepal? Yes, sir. Yes. Yes, you can join now. So there is an exam in November, and there is a good news for you. There is a center now in Nepal also. So you can write your exam in Nepal itself. और सर जो एग्जाम जो हम देते हैं तो एग्जाम के लिए जैसे कि प्रिपरेशन भी करना पड़ता है ना? तो प्रिपरेशन तो हम कराएंगे, तो इसलिए तो यहाँ पर हम तो बात कर रहे हैं आपसे। प्रिपरेशन कराने की तो हमारी कंपनी का काम है, प्रिपरेशन हम कराएंगे आपकी ऑनलाइन। जी जी सर जी। ऑनलाइन मोबाइल में आपकी ऐप रहती है, एंड्रॉयड में या जो भी आपका फोन है या लैपटॉप है, आपको उससे एक्सेस मिलेगा सारी क्लासेस का। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। यस, एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? सर मुझे पूछना था, ये अपना अगर पूरा कोर्स रहेगा तो काफ्स प्रिपरेशन का अपने आपके बैच में, तो उसका टोटल फीस कितना रहेगा एक्सपेंस के लिए? ये आप अपना फोन नंबर और ईमेल छोड़ दो हमारे चैट बॉक्स में, तो हमारी टीम आपको बताएगी कि किस किस स्टेप के कितने कितने पैसे लगेंगे, कितना कितना टाइम लगता है, कितनी हमारी फीस है, कितनी आपको गवर्नमेंट को पे करनी है, ये सारा आपको बताएंगे वो। आप अपना फोन नंबर ईमेल छोड़ दो, या ये एक फॉर्म डाला है हमने, उसको आप फिल कर दो, तो आपसे कॉन्टेक्ट करके बताएंगे आपको। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट प्लीज। Hello, You are- sir. My name is Swati. Yes, Swati. Swati. Yeah. So, sir, I have heard everything, and I've been watching your videos from very long time. It's very encouraging. So, earlier I was a bit scared of. I was a bit skeptical of writing exam, but then by Are you your from videos which? Are you from Andhra Pradesh? I'm from. Yeah. Yes, I'm from Hyderabad. Okay. So yeah, I felt very good. Like I got the There encouragement is to no, write the exam. basically the main problem in India, people are Yeah. not aware about this exam. So they thought this Yes, exam yes. is very, very tough and not able, So this is the main concern. That's why I'm trying to, create the awareness, among Indian community. This exam is very, very easy, I can say, Swati. There are so many women, basically, their age like 41, 42. They have 3 kids. They are working full time.
that take care in their home, still they manage to pass this exam. There is several examples we have. Yeah. So, sir, I have one more doubt here is that once we have passed CAPS exam, once we receive our visa, so is it necessary to work in pharmacy itself, or we can shift to any company-based, like with pharmacy-based Any job company? you can do, but since you pass the exam, so you Uh-huh. must work in retail pharmacy. This is my recommendation. You can work anywhere; it's up to you. Like But for the first year, for the recommendation is first year. because the license is very, very important. Okay. I can So give you you're. one example for this license importance. In India, if we want to do some, like attestation of the documents, so where we have to go? We have to go and like like SDM, maybe Tehsildar or something like this. So they have to do attestation of our documents only, right? Here in Australia, you can do as a pharmacist. You can certify any document. This is the power of Okay. registration in Australia. Okay. So that's what, sir. So you would suggest that to come, work as retail pharmacist for a year, and then later on, I can Yes, just yes. change my Get domain. your license, and Huh. later on, if you want to move, you can. Wherever you Okay. want, you Oh, can go. thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Please fill the form. We already give in the chat box, so our team will connect to you. They will give you the more information about the fees and all those things. If you have any other questions. Hello, good afternoon. Good afternoon. Hi, Shardi. Yes, sir. I had a question actually. What are the job perspective after writing CAPS? Like right now, like I've completed my B Pharmacy in 2019. I'm working in a different field, but I'm planning to get back to pharmacy. So I was aiming for CAPS. So What are the job same as perspective? same opportunity. You have to work in retail pharmacy or hospital pharmacy in Australia. So Okay. Australian retail pharmacy is not like India. There is a medical storage you are setting something here. Exactly. It's totally different here. So you No, are I'm a talking about very the hiring process. Like, how is it like easy or is it like uh, nothing easy. Even in India, yeah, also obviously, nothing yeah. easy to get a job. If someone have a one vacancy, there might be a 5,000 application for one vacancy. So nothing is easy. But in Australia, basically, the high skilled there people are not available here. So that's why they are calling to other countries to come to Australia and working. And so far, all the pharmacists, those are passing the exam, they are they are getting the jobs. Not a single pharmacist I know I did not got any job in Australia. Even my student is from Pakistan. He came last week here in Australia. He got already job. Ahmed is Pakistani guy. He already got the job. Okay. He's working here in Victoria. Okay. Also, I had like one question because as I told you that I'm working in a different field, and obviously I'll be writing the CAPS exam, and retail pharmacy will be a new thing to me. So, will that make a difference, or irrespective of Basically, different? there is no difference. Basically, there are several people they pass with us. They are doing MR job, 5 years. There is a one guy. He's just passed the exam. He was working last 5 years as a MR in Haryana from Okay. in GSK. He just passed the exam. He got also visa. He's coming to Australia now. Nice. Yeah. So, Okay. another guy's name is Naveen Jaiswal. He's from Madhya Pradesh. He's working in Amcure. He's a MR, 5-6 year experience. He passed the exam. He's coming to Australia. So this is very common. They are working in different field and coming to Australia after passing the exam. And also one lastly, sir, like, do you want to tell us like how much is the time that you should keep in our mind At least before? 3 to 4 hours you need to give for study per day for 90 days to pass the exam. And that is for like 6 months, or it depends on 3 us, or months, 90 days. 90 days. Okay. Yes. No issues. Thank you, sir. Thank you. So at least if you can give 3 to 4 hours per day for 90 days, definitely you will pass the exam in your first attempt. So no need to worry. I mean, exam बहुत ही easy है. कोई भी पास कर सकता है. इसमें कुछ एग्जाम में कुछ ऐसा है नहीं, कोई पास नहीं कर सकता. Any other question anyone has, or we can finish here? Yes, Asifa, Fatima. Hello, Assalamualaikum, sir.
Assalam, how are you? I'm good, thank you. How are you? Good. Yes, please. सर मुझे ये पूछना था आपसे कि अगर हम इट्स 2 लाख फीस फॉर योर एकेडमिक क्लासेस, राइट? तो अगर हम उसको ईएमआई में कन्वर्ट करेंगे, आपके पास ईएमआई का ऑप्शन भी है मैंने सुना है, तो अगर हम उसको ईएमआई में कन्वर्ट करेंगे तो पर मंथ हमको कितना पे करना पड़ेगा? ये डिपेंड करेगा आप कितने पैसे लेते हो। पैसे हम नहीं दे रहे आपको, वो कोई थर्ड पार्टी, हमारे पास बहुत सारी कंपनीज हैं जिनसे हमारा टाई अप है इंडिया में। आप इंडियन सिटीजन हो? ओके, जी हाँ, मैं हैदराबादी इंडियन। हाँ, तो इंडियन सिटीजन तो फिर आपको वो बताएंगे कि आप अब आपको कितना लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 लाख लेना है, तो 2 लाख को आपको कितने टाइम में आप पे करोगे? 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, 12 महीने में। तो ऐसे डिफरेंट वो है। आप ऐसा करो, अपना फोन नंबर ईमेल छोड़ दो हमारे चैट बॉक्स में, तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, फिर वो बताएंगे आपको कि ईएमआई कितना देना पड़ेगा। ओके जी, तो इसका टोटल ओवरऑल टोटल कॉस्ट सर, असिस्टमेंट से लेके कैप्स एग्जाम लिखने से लेकर पूरा एंड तक टोटल इसका चार्जेस क्या होगा? ये होता है 4-5 लाख हो जाता है पूरा। अच्छा अच्छा, ओके, यस, नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू। Please leave your phone number and email in our chat box, or you can fill the form. So our team will connect to you if you have any. Yeah, basically ये EMI option up to 12 month, and you no need to pay any interest rate on that. जो भी आपको हम EMI करा रहे हैं वो इंटरेस्ट फ्री है आपके लिए। आपको जितना अमाउंट रहेगा वो उतना ही आपको पे करना है मंथली इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते थे सर हमारे पास पैसे नहीं है, हम आ नहीं पा रहे, और तो इसीलिए हमने वो निकाली थी स्कीम के भाई जो थोड़ा फैमिली से जो है फाइनेंशियली बैकग्राउंड से थोड़ा वीक भी है वो भी यहाँ आ जाए। 5 लाख तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको यहाँ आप आ जाए तो 2-3 महीने में आप बराबर कर सकते हो वो पैसे, राइट? तो कुछ वो पैसे है नहीं, कुछ वेरी स्मॉल अमाउंट है वो, तो आप मस्ट ट्राई। जो इंडियन सिटीजन है उनके लिए ये जो है ईएमआई का ऑप्शन है। यस प्लीज, नेक्स्ट। एनी क्वेश्चन है किसी के पास, कोई और? हेलो, यस सर ये अब रूल चेंज होने वाला है ना जुलाई में, इससे कोई फर्क पड़ेगा सर? नहीं, अभी तो कोई ऐसा कोई फर्क नहीं है इससे। तो सर अब अभी मैंने कैप्स तो कर लिया है सर, कैप्स पास कर लिया है, इंग्लिश भी दे रहा हूँ, तो मैं वीजा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो आपने कहाँ से पास किया? आप किसी जहाँ से पास किया आप उनसे बात कीजिए। क्या नहीं नाम सर, मैंने तो अपने आप से किया है सर, आपका वीडियो देख के। अच्छा अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा उज्जवल है। तो फिर आप अप्लाई क्यों नहीं कर रहे जब वीजा, जब तुमने एग्जाम पास कर लिया था? एग्जाम पास कर लिया, वीजा अप्लाई करो। ठीक है सर, मैं आपको पूछ रहा था कोई रूल चेंज वगैरह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? अरे यार, पहले तुम अप्लाई करोगे, पहले तुमको मिल जाएगा, या वेट करोगे रूल चेंज हो जाएगा तब मैं अप्लाई करूंगा? तो जब जिस दिन आप एग्जाम अपने पास किया आपको उसी दिन करना चाहिए था जो है फाइल, आप वेट कर नहीं रहे हो सर, क्या? मेरा इंग्लिश नहीं था, इंग्लिश का भी अभी दे रहा इंग्लिश हूँ। आपका अब हो गया, नहीं हो गया? नहीं हो गया, इंग्लिश बाकी है इसलिए। अच्छा, तो वो तो अब आपका प्रॉब्लम है ये तो कि आपने इंग्लिश नहीं किया अभी तक, है ना? तो रूल चेंज होगा, कब किया होगा, तो वो तो चेंज होते ही रहते हैं रूल, और यहाँ तो डिमांड है, फार्मासिस्ट पे कोई ऐसा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। फार्मासिस्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, अभी बहुत डिमांड है यहाँ पर। मैं बोल रहा हूँ कि 3 साल तक कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और उसके बाद कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ अगर चेंज होती है तो शायद वो बंद कर दें या रिड्यूस कर दें, या जो भी कर सकते हैं, वो कुछ न्यू नियम आएगा उस टाइम पर अभी तो लोग अभी चाहिए फार्मासिस्ट, बहुत फार्मासिस्ट चाहिए यहाँ पर अभी। थैंक यू सर, ठीक है सर। थैंक यू। यस, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी का और किसी का है कोई क्वेश्चन? Hello. Yes, Rajat. Yes, had one more question. Sir, what will be the total expense, like अभी तो everything बताया था भाई, till 4 the से end? 5 लाख यार, आसिफा ने पूछा था अभी। आप कान तो थोड़ा खोल के रखो अपने। 4 से 5 लाख में बताया था टोटल कॉस्ट लगेगी। ये 3-5 बार में ये क्वेश्चन का आंसर कर जी चुका जी, हूँ। sir, I heard that, but like apart from that, और कोई extra expense आएगा till we get done नहीं and land in नहीं, Australia? ऐसा कोई खर्च नहीं आएगा। बेसिकली इफ यू आर ज्वाइनिंग एकेडमिकली, यू आर पेइंग आवर फीस, बाकी यू आर पेइंग गवर्नमेंट फीस।
उसके अलावा और कौन, कोई जी एजेंट थोड़ी नहीं बचे, कोई तुम एजेंट, कोई तुम तो पैसे चार्ज कर रहा है। देयर इज नो एजेंट बिटवीन अस, we will help you to complete your process. You have to apply your own visa, you have to pay your own fees to the government, so there is no involvement. There is some agencies in India, they are charging 10 lakh, 12 lakh, 14 lakh, 15 lakh with the same process, है ना? तो देयर इज कोई भी यहाँ कोई ना एजेंट है ना कोई है, आपको जो फीस देनी होगी आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट को देनी है अपने अकाउंट से। ओके, थैंक यू सर। यस, नेक्स्ट प्लीज। कोई क्वेश्चन है किसी का? भी नहीं, खत्म करें यहाँ पर। Please ask your question if you join later. Yes, Sufia Fatima, any other question do you have? Yes, Arif. No, sir. No, I don't have any questions. Thank you. सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर अभी मैं बहरीन में काम कर रहा हूँ। अभी 5 साल हो गया मेरा एक्सपीरियंस, अभी 6 साल चल रहा है। अभी कैप्स का तैयारी करने का प्लान सोच रहा हूँ मैं, अभी करे इंशाल्लाह करेगा अभी ये। तो कब करेगा यार? 5 साल तो आपने भाई पैसा कमा लिया बहरीन में, अब निकलो वहां से। इंशाल्लाह। बेसिकली मेन प्रॉब्लम क्या होती है, आप अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हो ना, आपको बाहर से आप निकलते नहीं हो। अब फॉर एग्जांपल कोई भी अगर मिडिल ईस्ट में जॉब कर रहा है, वही बोल रहा हूँ सर, आपने में हमारा मोटिवेशन था, तो हमने तुम्हारा यूट्यूब का चैनल बहुत देखा था। उसके बाद नवीन है ना, नवीन जसवाल। यस यस यस, और उसके साथ में काम किया आपने? हाँ हाँ हाँ, हमारा ग्रुप में अरे काम वाह, किया अच्छा अच्छा। नवीन भी नहीं कर रहा था, उसको मैंने बहुत ही मोटिवेट करके उसको पास कराया मैंने। वो हमारे साथ काम कर रहा था, जो वो ट्रेनिंग में इधर पे था ना, मेरे साथ ही काम कर रहा था। यस यस, तो आपकी फार्मेसी में था नवीन? हाँ हाँ, मेरा फार्मेसी में था। ओके, तो आरिफ अपना फोन नंबर और ईमेल छोड़ो हमारे चैट बॉक्स में, और इंशाल्लाह हमारी टीम मेरे को आपको मेरा नंबर देगी पर्सनली, आपसे तो बात करनी है अगर आप चाहो तो, ठीक है? इंशाल्लाह 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 जरूर सर। और मेरा एक क्वेश्चन था सर। यस प्लीज। अभी कैप्स पास करके अभी 491 और 190 वीजा अप्लाई करके ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं हम, उधर पे इंटर्नशिप करते हैं ना हम, उधर पे 40% करने के बाद रिटर्न एग्जाम एंड 70% करने के बाद ओरल 70%, या 70% करने का कंप्लीट इंटर्नशिप करने के बाद हम ओरल एग्जाम और रिटर्न एग्जाम कर देना पड़ता है ना? रिटर्न एग्जाम होता है ओपन बुक एग्जाम। ओके, बुक को खोलो, आंसर देखो और आंसर करना है, कोई फेल नहीं होता उसके अंदर। जो सिनेरियो देता है उसके हिसाब से हम जवाब देना पड़ता है, सही? यस, कोई भी फेल नहीं होता उसके अंदर। एक दूसरा एग्जाम होता है ओरल एग्जाम, उसकी भी हम लोग कोचिंग कराते हैं। और उसको भी अलग चार्ज करते हैं क्या सर आप उधर जाने के बाद? यस, जिंदगी भर का ठेका ले रखा है हमने आपको एक बार पैसे देने में भाई। आप जितनी बार आप सर्विस लोगों हर चीज के अलग पैसे, वो आप 2025 में आप आओगे पढ़ने के लिए वाला एग्जाम, 2023 में आप फीस दोगे क्या? उसकी फीस में एडवांस में दे दो, उसकी फीस हमारी नहीं है, तो आपको वो भी करा देंगे हम फ्री में। ओके सर, वही पूछना था। इंशाल्लाह मैं वो तो बेसिकली है ना कि अभी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना, कि अभी आपको कैप्स करना है, तो उसके आपको पैसे देने हैं, आपको आना है ऑस्ट्रेलिया। जब वो आगे वो वाला लोगे आप, बहुत सारे लोग उस एग्जाम को खुद ही प्रिपेयर करके लिख लेते हैं। नहीं, अभी फैमिली के साथ मैं हूँ बहरीन में, अभी फैमिली के साथ हूँ। अभी सिंगल मूव करना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया बिफोर आई एम गेटिंग इनटू द permanent job there in Australia after internship completed. So it is possible after that I can bring the family? Yes, possible. Okay, thank you so much sir. Inshallah I will fill the form। आप जो सोचो मत ही, अपना स्टेप लो, क्योंकि यहाँ क्या है कि आपको फुल वर्क राइट रहता, आपकी फैमिली को भी और आपके बच्चों को एजुकेशन यहाँ फ्री रहती है। जितने अगर आपको 3 बच्चे हैं, 4 हैं, 5 हैं, 2 हैं, जो भी हैं, उनको स्कूल में फ्री होती है, हेल्थ केयर फ्री रहता है, यहाँ पर सब चीज फ्री रहती। इंशाल्लाह सर्वाइवल करना बहुत ही इजी रहता है ऑस्ट्रेलिया में। ओके सर, ओके, thank you so much for the conversation sir। I will leave my mobile number as well as my email ID। yes, अरे प्लीज लीव। और अगर आप फ्री हो तो कल को एक थोड़ा सा आपसे एक इंटरव्यू करते हैं, आपका बहरीन में क्या सिचुएशन चल रही है फार्मासिस्ट की।
इंशाल्लाह जरूर सर, जरूर इंशाल्लाह। ओके बाय। थैंक यू भाई। ये आरिफ का नंबर ले लो। हाँ हाँ, अच्छा तौसीफ भाई। अच्छा आरिफ, यहाँ पर हमने चैट बॉक्स में फॉर्म डाला, इसको फिल कर दो आप, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर सर, इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह। ये हाय आसिफ, आसिफ अली। अरे ये पहले पूछेगा, उनके पहले के उठे हुए हैं। अरुण कोई क्वेश्चन है आपका दोबारा से? वो उनका पहले से ही उठा हुआ था। और ये सलमान कोई क्वेश्चन है आपका? आसिफ अली। यस प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन इन डाउट। हेलो। यस हेलो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि अगर जैसे मैं मेरी वाइफ को, मेरे बच्चे को डिपेंडिंग लेके जाता हूँ, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि 5 लाख रुपए खर्चा आएगा, ठीक है? तो डिपेंडिंग पे क्या मतलब ज्यादा खर्चा हो जाएगा? क्यों ये नहीं होगा? पूछ तो फीस नहीं दोगे उसकी आप? नहीं बच्चे की कितना? फीस दोगे, जितने बच्चों में उसका अलग फीस दोगे। मैंने तो इंडिविजुअल बच्चे को बताया था। तो अच्छा। 5 लाख मैंने बताया, वो एक बंदे का खर्चा है। अब हाँ आपकी हाँ बात, अगर आप वाइफ हैं, आपके अगर 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है, तो उसके अलग से फीस जाएगी, और वो फीस आप गवर्नमेंट को दोगे। हमको तो वो जो है, जो भी फीस है एकेडमिकली, तो जस्ट एकेडमिकली इज नॉट ए एजेंसी भी, हमारा एक कोचिंग सेंटर है। वो हम आपको एग्जाम पास कराएंगे, बाकी जी। सारे पैसे जो भी आप दोगे गवर्नमेंट को दोगे। तो हाँ उसमें पैसे बढ़ जाएंगे। आप अपना ये फॉर्म फिल कर दो, वो आपको हाँ को कैलकुलेट करके हमारी टीम बता देगा वो कितने पैसे लगेंगे आपके, कि आपके कितने बच्चे हैं, वाइफ हैं, और वो हाँ। कितने पैसे लगेंगे आपको सारा करके, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। जो मैंने बताया था वो 4-5 लाख, वो एक बंदे का है, ये सिंगल बंदा हो। अब किसी की अगर वाइफ है तो हाँ वीजा में 50% उसके पैसे लगते हैं। अगर हाँ आपका कोई बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, उसके भी 25% पैसे लगते हैं। तो हाँ। ऐसे पैसे बढ़े चले जाएंगे आपके, आपकी जितनी फैमिली बढ़ेगी। नहीं, जैसे अगर एक मैं हूँ, मेरी वाइफ है और एक मेरा बच्चा है, अभी 2 साल का है बच्चा। हाँ तो 6-7 लाख हो जाएंगे। 6-7 लाख हो जाएगा अराउंड। ठीक है, मेरा जैसे अगर एग्जाम हो जाता है। बेसिकली ये जो पैसे जो हैं, ये हमको एक बार में नहीं देने, आपको 6 लाख या 5 लाख 4 लाख, जी ये जी। देने हैं आपको पूरा 6 महीने के अंदर, 6 महीने अच्छा। 8-9 महीने में, है ना? हाँ हाँ। तो वो ये आपको इंस्टॉलमेंट में देना है बेसिकली। ठीक है ठीक है, वही मेरे को एक्चुअली में थोड़ा सा डाउट था कि जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया, मैं वही सुन रहा था, लेकिन खाली मेरे को फैमिली के ऊपर से थोड़ा। और डिपेंडिंग अगर मैं मेरे वाइफ को मेरे डिपेंडिंग पे लेता हूँ, तो उसको भी क्या मतलब पीटी का एग्जाम देना पड़ेगा? ये तो जैसे वो अगर देंगी, उनको बेसिकली मिनिमम बेसिक उनको आना चाहिए, कि वो जो है यहाँ पर उनको जो है, मतलब जो ना, इनको इंग्लिश आती है। हम्म। मतलब यहाँ पर अगर वो आती हैं तो कुछ सब्जी वब्जी खरीदने जाएंगी, नहीं जाएंगी, मार्केट जाएंगी, नहीं जाएंगी। जी तो जो जी। बेसिक होती है, जो मिनिमम जो होती है, वो जो है आनी चाहिए हाँ, 5.5। 5.5 आना चाहिए। ठीक है सर, यही मेरा। और पीटी के लिए स्कोर कितना होना चाहिए बोले आपने? ये वो तो आईएलटीएस। 65 होना चाहिए आपके लिए। 67। 65 वो बहुत ही 60। इजीली है, वो आ जाएगा। आप एकेडमिक लेवल ज्वाइन करो, अल्लाह का नाम लेके। इसके लिए असेसमेंट कराएंगे आपका पहले, फिर कैप्स, फिर इंग्लिश, ये सारे स्टेप्स हो जाएंगे। अगर आपने चालू कर दिया ना, तो ये सारे हर्डल्स खत्म हो जाएंगे, है ना? बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कि कब करें, कब करें, करें या नहीं करें। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है। आपको स्टेप लेना है, डिसीजन लेना है बेसिकली। मेरा अपना, मैं मतलब जैसे कि अभी आरिफ भाई ये 5 साल से जॉब कर रहे, जो बहरीन के अंदर। मैं खुद था, मैं मलेशिया में था, मेरी 4 साल जॉब थी मलेशिया में। तो मेरा भी था, मेरे को अच्छी खास, मेरे को करीब 1.5 लाख मेरी सैलरी थी वहाँ पर, और मैं बहुत खुश था। मैंने कहा तो मैं भी ऑस्ट्रेलिया नहीं आना चाहता था। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने गाइड किया कि नहीं, आपको अगर आगे बढ़ना है लाइफ में तो आपको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। और फिर मैंने स्टेप लिया, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आया। तो बंदा अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। वो जहाँ पर है वो वहीं पर रह जाएगा। नहीं बिल्कुल और सर। आप ऑस्ट्रेलिया में अगर आप आ रहे हैं तो इट इज नॉट जस्ट फॉर यू। आप अपनी फैमिली के लिए आ रहे हो बेसिकली। वैसे भी आप सभी की एज 30 ईयर के आसपास तो सबकी होगी, अराउंड में 30, किसी 35 होगी, 32 होगी, ठीक है?
तो आपकी आधी एज तो वैसे ही कट चुकी है, आधी और कट जाएगी, आप कहीं आप इंडिया में हो या कहीं भी आप हो। तो बेसिकली यू आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर योर आपके जो बच्चे जो हैं उनका जो भविष्य के लिए आप लोग यहाँ पे आ रहे हो। यस सर। एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है सर, इसके बाद टॉपिक खत्म होगा। मेरा ये है कि मतलब पीटी के लिए डिपेंडिंग वीजा के लिए कितना स्कोर होना चाहिए? कहता है वो 5.5 IELTS या उसको बहुत ही लो स्कोर है, मिनिमम स्कोर होता है ये। और पीटी के लिए 65। जी। नेक्स्ट प्लीज। हेलो सर, नमस्ते सर। खत्म कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है। तो हेलो यस हेलो। यस यस हाँ सर नमस्ते सर। नमस्ते। सर एक्चुअली मैं एंड मेरे वाइफ है, मैं फार्मासिस्ट हूँ और मेरे वाइफ स्टाफ नर्स है। एक्चुअली सर हम दोनों प्रिपेयर कर रहे हैं अभी जाने के लिए। हम सोचे थे अभी DHA करके हम दुबई जाए, बट अभी दुबई का हालत जैसे हम लोग को समझ में आ रहा है, हम सोचे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जाए और यहाँ पे थोड़ा वहाँ पे सेटल हो जाए। एक्चुअली सर हम दोनों के लिए कितना खर्चा हो सकता है, मतलब कंप्लीटली पढ़ाई से लेके अप टू एग्जामिनेशन ऑल द थिंग्स सर। बेसिकली आप एक बंदा इस पे आ जाए तो वाइफ आपके आप पे डिपेंडेंट हो जाएगी, है ना। ओके सर। तो वो 5 6 6 7 लाख में आपका हो जाएगा पूरा। पूरा सर कंप्लीटली पढ़ाई पढ़ाई एग्जाम सब सर? एवरीथिंग, गवर्नमेंट की फीस, वीजा की फीस, इवन इसमें टिकट भी मिला लोगे, सब सब हो जाएगा इतने में। ओके ओके ओके। अगर साथ में सर मैं एग्जाम क्रैक कर देता हूँ एंड वीजा मेरा लग जाता है, उसके बाद कुछ पैसा मेरे हाथ से लेके जाना पड़ेगा या उसी 5 से 6 लाख में हो जाएगा सर? नहीं, 4 5 लाख रुपये आप लेके जब भी जाओगे, जॉब नहीं लगी 1 2 महीने तो क्या करोगे, रहने खाने को कहाँ से करोगे। गवर्नमेंट भी देखती है ना कि भाई आपको अगर 1 आध महीने जॉब नहीं मिलेगी तो 100 पैसे तो लेकर आओगे ना आप। जी 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 जी। अगर आप दुबई में जाओगे 3 महीने को तो क्या करोगे, तो भाई पैसे लेके जाओगे वहां पर, अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो फिर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वैसे ही रहता है यहाँ पर भी। ओके 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 सर, थैंक यू सर। थैंक यू। यस काशिफ, कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, तासिफ क्वेश्चन किसी का है नहीं, अब इसको खत्म करो। 1.5 घंटा हो गया है, अभी कोई क्वेश्चन कर नहीं रहा है। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो, अभी तो मैं भी फिनिश करने वाला हूँ। यस अभिषेक। Sir, how easy it is to get visa after clearing the exam? तो पहले आप जानोगे वीजा इजी है नहीं, फिर आप एग्जाम में बैठोगे। जितने नहीं कितने सर, बच्चों को मिल गया, मैं कितनी जैसे हमने आजकल हमने कितने इंटरव्यू कर करके डाले हैं, डेली इंटरव्यू करके डालते रहते हैं, जो जो बच्चे हमसे पास करते रहते हैं। हमारे पास टाइम नहीं होता है तो इतने इंटरव्यू करते नहीं है, पर हम पोस्ट डालते रहते हैं जिसको भी वीजा मिल रहा है, सबको वीजा मिल रहा है बच्चों को। 4 दिन में, 5 दिन में, 1 दिन में। अभी ये लगा लो को फार्मासिस्ट की इतनी वैल्यू है ऑस्ट्रेलिया में, किसी ने अगर बीटेक किया है IIT दिल्ली से, उसको वीजा नहीं मिलेगा, उसको वीजा मिल जाएगा 1.5 साल लग जाएगा वीजा मिलते मिलते। और किसी ने छोटे मोटे कॉलेज से ही फार्मेसी कर लिया, एग्जाम पास कर लिया, उसको वीजा पैसे मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है डिमांड में सप्लाई पे। तो यहाँ वजह डिमांड फार्मासिस्ट की, इसलिए वीजा जल्दी मिल रहा है। हाँ, अब आप देखो, आप तो बोलोगे भाई ये तो IIT से किया हुआ था इंजीनियरिंग, इसको वीजा क्यों नहीं मिल रहा, ये तो बहुत टॉप बंदा है। तो वीजा उस पर नहीं मिलता, वीजा मिलता है कि आपने कौन सी ऑक्यूपेशन क्या है आपका, क्या करते हो आप, किसकी डिमांड है गवर्नमेंट की, नहीं किसको लोग, कौन से लोग चाहिए इनको, जो लोग चाहिए उनको फास्ट वीजा मिलता है। हेलो सर। यस काशिफ। सर एक्चुअली मैं तो बिल्कुल अभी सोच रहा हूँ कि मैं इसको कैप्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करूँ। फार्मेसी मैंने किया है 2019 में। तो उसके लिए ये है कि बहुत सारे मटेरियल्स तो मैंने सर्च किए हैं कैप्स की वेबसाइट से भी, इस तरह से अपने नोट्स भी किए हैं। तो इसके प्रॉपर चैनल नहीं मिल सकता जहाँ से हम प्रिपरेशन करें, कुछ ऐसा तरह? तो ये हम क्या करा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास तो 500 बच्चे हैं, हम लोग प्रिपरेशन तो कराते हैं, हमारी कंपनी यही तो कराती है। हम लोग ए से लेकर जेड तक बेसिकली कंप्लीट कराते हैं फार्मासिस्ट का। प्लीज अनम्यूट, म्यूट करो अपने आप को, आवाज आ रही है। तो बेसिकली हम जो कराते हैं ना, हम पूरा वो कराते हैं, आपको स्पेसिमेंट कराएंगे,
आपको कैप्स की पूरी कोचिंग देंगे और उसमें लाइव क्लास लेते हैं हमारे लेक्चरर, आपको पढ़ाएंगे, आपके मोबाइल फोन में ऐप होती है उसके अंदर, है ना, वो एग्जाम पास कराएंगे, उसकी कोचिंग कराएंगे, फिर जो है तो सर उसको ज्वाइन करने का कोई फिर कोई लिंक कुछ इस तरह का जो मैं ज्वाइन कर सकूं कुछ ये तरीके से? आपने ये हमारे चैट बॉक्स में जाओ, यहाँ पर एक फॉर्म दिया गया है, फॉर्म को फिल कर दो आप, तो ठीक है। अभी एक दो घंटे में हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी, ठीक है। ये चैट बॉक्स में ठीक है। ये अपना नंबर डाल दो चैट बॉक्स में, अपना ईमेल आईडी। मैं अभी डालता हूँ सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। ये तौसीफ ने अभी ये नंबर डाला है, ये जो है फॉर्म, इस फॉर्म को फिल कर दो आप, तो टीम हमारी कॉन्टेक्ट करेगी आपसे। अरिंदम खत्म करें क्या? यस सर, कुछ आगे कुछ और दूसरा मीटिंग्स भी है, तो आई गेस सिंस नोबडी इज आस्किंग एनी क्वेश्चन, तो हम इसको एंड करते हैं। यस, चलो ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और प्लीज आप मस्ट ट्राई करें अगर लाइफ में आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप मतलब एकेडमिकली आप ज्वाइन करो नहीं करो, सेकेंडरी मैटर है। अगर आपको लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो एग्जाम लिखो, आगे जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कनाडा, यूएस, जहाँ भी आपको जाना है, अपना ड्रीम है उसको कंप्लीट करो, है ना। अगर आप सोचते रहोगे तो फिर आप कहीं जा नहीं पाओगे, और जहाँ पर आप हो, जो भी आप जॉब कर रहे हो, वेदर इट इज एमआर और फार्मासिस्ट इन इंडिया, जो भी आप करो वही करते रहोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने के लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा। और लास्ट में कहूँगा कि नो रिस्क नो गेन। अगर आप रिस्क ही नहीं लोगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है। तो इसलिए आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, और वेदर इट इज कैप्स हो या पीबीसी या कोई भी अदर एग्जाम हो, आपको जहां भी जाना पड़ेगा वो आपको एग्जाम का पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ खत्म करते हैं इसको। सर हेलो। यस सम्राट। सर सॉरी फॉर इंटरप्ट सर, एक्चुअली माय लास्ट क्वेश्चन सर, मेरा एक्चुअली सर मैं बीफार्म के बाद मैंने एमपीएच कर लिया। तो एक्चुअली सर मैं आज फार्मासिस्ट जाना बेटर रहेगा, आज एमपीएच को लेके जाना पड़ेगा बेटर रहेगा सर? इज लास्ट क्वेश्चन सर मेरा। एमपीएच को तो कोई वैल्यू है ही नहीं। एमपीएच अगर ऑस्ट्रेलिया से भी करते हो ना, तो उसे आज की डेट में कुत्ते नहीं पूछ रहे, सिंपल सा फार्मूला इसका ही है। जो आपने डिग्री की है बी फार्मेसी, उसी पे आप आगे जाओगे। इवन अगर आपने एमपीएच यहाँ के भी किया ना, ऑस्ट्रेलिया में आके भी, तो भी आपको कैप्स लिखना पड़ेगा। हमारे पास शायद ऐसे 100 बच्चे होंगे जो यहाँ पर एमपीएच करने आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, और वो लोग कैप्स एग्जाम लिख रहे हैं। ओके ओके सर, ओके हाँ, ओके तो ओके सर। आपको फार्मेसी की डिग्री पे आना पड़ेगा, कैप्स पास करना है, और फिर उसका ऑस्ट्रेलिया आना है आपको, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सम्राट। चलिए फिर यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय एवरीवन।